होराइजन जीरो डॉन के वीडियो में स्वागत है। तो ऐसे हो गेमर्स, तो पिछले वीडियो में मास्टर ओवरराइड मिला था, मुझे लगा उससे और जल्दी हो जाएगी ये मशीन्स ओवरराइड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है वो मेन क्वेस्ट का ही पार्ट है। मेन क्वेस्ट में कुछ करना होगा। अभी तो फ़िलहाल ये करते हैं, ये मेन क्वेस्ट है हमारा द लूमिंग शैडो। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, मुझे देख लेने दो इसमें है क्या। Hades intends to use the spire to transmit a resurrection signal, calling millions of buried war machines from their graves. When the time comes, Aloy must stand against the shadow. Okay, but she will not fight alone. आखिर में पता नहीं क्यों रुक गया था। बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ता है यार, और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इधर अंदर फास्ट ट्रैवल कर सकता था, पर मैं नहीं चाह रहा कि मेरा माउंट गायब हो, क्योंकि फिर मुझे दूसरी जगह फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर ओवरराइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा रहने दो, थोड़ा ज़्यादा दौड़ लूँगा मैं, वो चलेगा मुझे। रोल कर करके चलें क्या? दौड़ भी सकता हूँ मैं। ये यहाँ पे कब आई? बड़ा लंबा जाना पड़ता है, फिर भी सही बता रहा हूँ। ये जगह यार काफ़ी सुंदर है, कुछ भी कहो, ये जगह काफ़ी शानदार है। जिस टाइप का एरिया है ये। ओलिन यहाँ पे अभी भी खड़ा। ओलिन कह रहा हूँ, एरन, सॉरी एरन। Still want to talk? I might need a hanky. मुझे लगा कुछ नए डायलॉग्स होंगे। I'll see you later. I hope so. तो ठीक है, एकदम से वहीं पे खड़ा है। ये यहाँ पे बैठ क्या देखता रहता है? सामने तो भैया ये दीवारें ही हैं बड़ी बड़ी खड़ी हुई, क्या देखता है यहाँ पे बैठ के? Aloy, what brings you to Meridian? A threat. The Eclipse will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. बता भी दिया इतनी जल्दी? Have you spoken to Blameless Murad? Not yet, but I will. He wishes to speak to you. Defensive preparations are his responsibility. ओके चलो, ब्लेमलेस मराद से चल के बात करते हैं। ये कैसा नाम है पर अजीब सा, ब्लेमलेस मराद। Quietly does it. Panic in the city will only create another way to go if you're lost. I'm a guard. And do keep me appraised of each new arrival.
अरे इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हैं ये लोग? Aloy. Preparations are underway on the rigid defenses at the spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the spire. Erend and the Vanguard are there? Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived at the spire. They have resisted the offer of a royal audience. Perhaps you could parley with them. I will. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. ठीक है. Rest before the final battle or visit both defense sites. ओके, ये कर लेते हैं, ऑप्शनल देख लेते हैं. कोई बुराई नहीं है ऑप्शनल करने में. एक सेकंड रुक जाओ, पर मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं कहीं जाऊँ, मैं अपने माउंट तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि फिर यहाँ पे जाना ही पड़ेगा मुझे. मेरे माउंट को मैं बुला तो सकता हूँ, फिर बैठ के ही मैं करता हूँ. तो पता भी नहीं मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं. मेरे ख्याल से तो यही सही जगह है. बड़ा लंबा जाना पड़ता है यार. एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ. फास्ट ट्रैवल मैं कर सकता हूँ ना डायरेक्टली यहाँ पे? कर तो सकता हूँ, पर मेरा फिर माउंट गायब हो जाएगा. मैं थोड़ा बाहर निकल के मैं माउंट बुला ही लेता हूँ. अगर थोड़ी दूर अगर फास्ट ट्रैवल करो तो माउंट गायब हो जाता है, ये तो मैं चाहता नहीं हूँ. He may dress a bit too fancy, but he's made a place in the Sundom for the offering. जैसे जैसे इस जगह के अंदर जाओ वैसे वैसे जगह कंफ्यूजिंग होती जाती है. इनको कुछ शार्ड्स दे दो बस मुझे. डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकता क्या मैं? काश लगा सकता, डायरेक्ट पहुंच जाता मैं. यहाँ पे तो पानी है, तो मुझे लगता है इस जगह पे मैं कूदूंगा तो मर ही जाऊँगा. कहाँ जा रहा हूँ यार मैं? भी नीचे उतरने का रास्ता नहीं है यहाँ पे. अरे नीचे उतरने का रास्ता दे दो यार. यहाँ पे कुछ है तो मुझे नीचे लेके जाए. मुझे लगा कुछ लिफ्ट टाइप की चीज़ है यहाँ पे. फास्ट ट्रैवल में इधर ही कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा माउंट है. क्या मैं उतनी दूर जाना नहीं चाह रहा था. इधर से ना गायब हो जाए. गायब हो ही गया मेरा माउंट. बहुत शानदार. मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट उधर ही चलो. इधर तो पहुँच जाऊँगा, इधर चढ़ना पड़ जाएगा मुझे. यहाँ पे है ना स्ट्राइडर.
तो सबसे पहले तो वो स्पाइडर लेते हैं चल के। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अब निकलो इस जगह से। चलो स्पाइडर तो मिला, ये जगह चेक करते हैं। ये टैब है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मतलब मुझे पता है, मैंने इनको यहीं पे आने को कहा था पर। Aloy, I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry, I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. ठीक है। This place really couldn't be more different from the sacred land, could it? Always stay bright. There are materials like I've never seen in the markets above. I tried to explain stitchers and makers to these Karja. You'd think that wouldn't take much explaining. This place really couldn't be more ओके different ठीक from है, the ये तो sacred रिपीट कर रहा अपने डायलॉग। मुझे लगा उसके पास कुछ और है कहने को, पर ठीक है। और क्या करना है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे बात करना है। Huh. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Petra Forge woman. I hail from the Free Heap. I'll be heading back in the next dust storm. Murad asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well, but I've cleared their throats so they can really roar. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. ओके ट्राई करते हैं। इसमें तो मुझे एमओ दिख नहीं रही। होल्ड एंड लोड एमओ फ्रॉम नियर बाय पाइल, रिलीज टू फायर। ओह ये था, मैंने शूट कर दिया। वो काफ़ी अच्छा वेपन है। इसको मैं वापस कैसे रखूं? ओह ये कहाँ फेंका गया? चलो छोड़ो, ये तो हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। और मैं इसमें बैठ जाता हूँ पहले, नहीं तो मुझे फिर लंबा घूम के जाना पड़ेगा। इस साइड जाना है यार, जाना तो इसी साइड है। अच्छा हुआ ले आया, नहीं तो मुझे चढ़ना पड़ता पूरा ऊपर। बस यहाँ पे मुझे शॉर्टकट दिख रहा है ऊपर जाने का, पर मुझे लगता है मैं माउंट से जल्दी पहुंच जाऊंगा।
तो फिलहाल इस मिशन में मैं इधर से उधर घूम ही रहा हूँ। ओ शिट ये कहाँ जाने लगा था मैं? मुझे लगा मैं नीचे गिरने वाला हूँ। Wind must have toned down from the mountains. It rises taller than the highest tree. These cards are in their frilled armor look like turkeys. But there are so many. And now we are so few. They are not our foe. Not this time. Quiet now. She comes. ये सोना है? War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. ओके, इनको ये जगह पसंद नहीं है लगता है। वाल, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. ओके, इसको भी ये जगह पसंद नहीं है तुम्हें। ठीक है, कोई नहीं। अब किससे बात करना बाकी है? So who are these guys? They call themselves the Eclipse. What does that even mean? It's when the moon gets in front of the sun, idiot. Is that supposed to sound scary or something? I don't know. They used to be Karja. Karja are always yammering about sun and shade. Well, if they used to be Karja, how tough can they be? Yeah, they're best guys dressed like birds. We'll rip their little feathers off. And let's not get cocky, boys. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. That's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit them like a hammer till they can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Aaron. Ursa would be proud. Well, only if we win. यार ये जो कैरेक्टर है एरन, ये बहुत तगड़ा डेवलप किया है। ये मुझे पसंद है कैरेक्टर, क्योंकि जब पहली बार इससे मिले थे इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे ये, पर सही में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया इस कैरेक्टर को।
मेरे ख्याल से तो हो गया ये ऑप्शनल। चलते हैं हम लोग सीधे अब करते हैं जो मेन काम है हमारा। अभी तो मुझे फिर भी उधर तक दौड़ के जाना ही पड़ेगा, रूम तक, ओलिन के रूम तक। लोग कितनी दूर जाना है भाई, अभी भी काफ़ी दूर जाना है मुझे। Fine goods for a fair price. I've got all the best food. Boland's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? मुझे याद है क्या अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी तक। उसकी वाइफ और डॉटर है कि सन है, उसको हमने रेस्क्यू नहीं किया। पर ये मेन क्वेस्ट का पार्ट था ना, वो मुझे मिल जाना चाहिए था जब मैं मैप के एकदम कोने में गया था इधर कहीं पे। तो फिर कौन सा क्वेस्ट है ये? मेरे ख्याल से ये है, यही है। मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा क्वेस्ट है वो। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ से शुरू कर नहीं सकता, ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट किया जाए पहले। रेस्ट बिफोर द बैटल, नो वे बैक। नो वे बैक का मतलब क्या? तो कर ही लेते हैं। Could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you rust after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. ये कौन सा क्वेस्ट था?